Hello students. So the question that we are going to discuss it today is you can see the question. The following graph was plotted between V and I values. So you can see the graph. So the question is, what would be the values of V by I ratio when the potential difference is 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt respectively. तो व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस वैल्यूज. ठीक है, तो इसको पहले कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को देखना है कि इससे जो ग्राफ का कैलकुलेशन आएगा उससे हम लोग को क्या वैल्यू मिलता है. ठीक है, मतलब कंक्लूजन क्या होता है. ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है. The question is based on this graph. Okay, so this is a one graph. This is a VI graph. So I values is given on the x-axis and V values are given on the y-axis. So the values are given. I values are given 0.2, 0.4, 0.6, so it will be increasing by 0.2 rate. Then if you consider the V graph, it is 0.5, 1, 1.5 and 1.6. In the question it is given to find out the V by I ratio at the point 0.8 volt, 1.2 volt and 1.6 volt. तो इन तीनों पॉइंट्स में हम लोग को वोल्टेज को कैलकुलेट करना है, V by I रेशियो को. तो V by I रेशियो को अगर कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे क्या करना होगा. सपोज मैं 1.6 को पहले कैलकुलेट करता हूँ, तो 1.6 से मुझे एक परपेंडिकुलर लाइन टुवर्ड्स दिस लीनियर ग्राफ. ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करना होगा. द सेम वे यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना टुवर्ड्स 0.6 एम्पियर. ओके, देन सपोज इफ आई कैलकुलेट द V by I रेशियो, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे V का वैल्यू और I का वैल्यू क्या होगा. V का वैल्यू होगा 1.6 वोल्ट और जो I का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 0.6 एम्पियर. ओके, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 16/6 डेसिमल को हटा के. नाउ इफ आई रिमूव द डेसिमल, तो इसको हटाने के बाद 6 to the 12, then 40, so 6 6 is 36, then again 40, so it will be 2.66. V by I ratio is nothing but your ohm. Okay, because V by I is nothing but a resistance, because as we know V is equal to I into R, and if I do V by I, so we'll be getting as resistance. And as we know, this resistance is a constant. That means this is a fixed value. Okay. Now, same way if I calculate 0.8 and 1.2, you will be getting the same value because these values are always fixed because it is showing a linear curve. That means for 0.8. 1.2, you will be getting the same V by I ratio, that is 2.66 ampere. We have got for 1.6, that is equal to 2.66 ampere. For 0.8 volt, if I again calculate V by I ratio, so for that what we have to do, you have to take one point from here. This is 0.5 to 1.0, so 0.8 will be somewhere here. So you have to draw a perpendicular line here, then you can draw a perpendicular line from there. Okay, तो अगर इसका भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद भी इसका भी वैल्यू वही 2.66 ओम ही निकलेगा. देन सेम वे फॉर द 1.2 वोल्ट, द V by I रेशियो अगेन इट विल बी 2.66 ओम. सो ये हम लोग का फिक्स वैल्यू है क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द सर्किट एंड कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, the V across, there is a potential difference across the 10 ohm resistor. So this is your circuit. तो इसी सर्किट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको निकालना है. देन इस 10 ohm रेजिस्टेंस पे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है. तो अगर पहले हम लोग ये सर्किट देख लेते हैं. दिस 10 ohm एंड 20 ohm अभी दोनों सीरीज कनेक्शन पे, और सीरीज कनेक्शन पे हम लोग को पता है कि जब भी करंट फ्लो करता है, सो दिस इज I पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल द करंट विल फ्लो. तो जो भी करंट फ्लो करता है टुवर्ड्स द 10 ohm रेजिस्टेंस और टुवर्ड्स द 10 और 20 ohm रेजिस्टेंस, करंट का वैल्यू फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है. बट इफ यू कंसीडर द पोटेंशियल डिफरेंस, इफ आई कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ohm एंड 20 ohm, तो दोनों में वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग आएगा. तभी क्वेश्चन में खाली इसके अक्रॉस ही कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो पहले इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को देखना होगा कि सर्किट पे टोटल रेजिस्टेंस कितना है. ठीक है, सो लेट अस सी व्हाट विल बी द टोटल रेजिस्टेंस. So if I calculate the total resistance, since these are in series, if I consider this as a resistance R1 and this as resistance R2, so total resistance, okay, total resistance, I'll take this as RT. Okay, the total resistance that will be equal to, since they are in series, तो यहाँ पे R1 plus R2 हो जाएगा. ठीक है, then after that
your R1 value is 10 and R2 value is 20. So R1 is equals to 10 and R2 value is equals to 20. So this will be equals to 30 ohm. तो ये हो गया हम लोग का total resistance का value. Then if I calculate the total current flowing, okay, the current flowing in the circuit. The current flowing in the circuit we have to use the Ohm's law. So I will be equals to V by R, but I will be taking the total resistance. So V by RT. Okay, so V it is taken as 3 volt. RT, the total resistance is 30 ohm. Okay, so it is 3 by 30, so it will be 1 by 10. That means your current value will be equals to 0.1 ampere. This is your current flowing in the circuit. Then number 2. Number 2 is a V across the 10 ohm resistance. The V across the 10 ohm resistance, now how will you calculate? It is given to calculate across this R1. So potential difference across R1 and potential difference across R2, both will be different. So I will be calculating across this. So for that, again I will be using the Ohm's law. So V will be equal to I into R1. Okay, so I, we have got a 0.1 and R1 is giving us a value of 10. Okay, now if I calculate this, I will be getting the value as 1 volt. Okay, so this is the answer for this question. Total resistance 30 ohm, I 0.1 ampere and voltage is equal to 1 volt.